इंस्टीट्यूट ऑफ द वेल्डिंग जमशेदपुर के द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के वेल्डिंग के विशेषज्ञ जो वेल्डिंग प्रौद्योगिकी के ऊपर में वेल्डिंग में क्या क्या परिवर्तन और चेंज आ रहा है उसके बारे में यहाँ पर अपनी विचार व्यक्त कर रहे हैं। आइए आपको इंस्टीट्यूट ऑफ द वेल्डिंग में डेलीगेट जो आए जो विशेषज्ञ आए हैं उनसे आपको बात कराते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि वेल्डिंग जो फील्ड है उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना ADLive। As I mentioned that in Industry 4.0, this 3D printing play a very important role. So there is a dedicated 3D printing lab available for the first year and the second year students, wherein they need to undergo the development of the digital model. I mean, we all talk about prototyping and everything. So students, they need to, in the first year itself, they need to undergo the CAD software, the engineering drawing, wherein the 50% is connected with the conventional drawing, and 50% is your, with the use of software. So then subsequently that particular digital model is converted into the 3D model, and then students in the process learn how to do the 3D printing with the help of polymer facility. And there are some additional facility you can see here, that the 3D scanners are also there to understand the entire flow chain in case if you don't have the engineering drawing and still you want to do some printing. So then 3D scanner can be used. So this is the very basic facility you can say. These are there are many machines of like this available. I mean, filament based machines, the resin based machine, the 3D scanner, and then you have a curing chambers as well. So this is one. And when it comes to the metal 3D printing, as I mentioned that we have a metal 3D printing facility on our campus. Very recently our Honorable Secretary General Sir also visited this facility in the month of November. इसके तौर पे वेल्डिंग और गैस कटिंग टेक्नोलॉजी इंडिया में उस स्तर पे नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है। इवन आपके जितने एकेडमिया हैं कोई भी इसको एक कैटेगरी का इंजीनियरिंग नहीं मानता है, जो एक पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। So हम लोग को इसके बारे में सोचना है। Communicate T-shirts where on the back of each person stands "I am safety." So these are all small steps, but a lot of small steps will create this awareness that people are engaged to move into this. Right? So that's for that side of the topic about health and safety. Another topic that I would like to bring to you is more about the group Voestalpine AG. I am part of it. I am equally responsible. Why are we not able to scale up? Okay, thank you. Thank you, sir. And the detail shortly brief my channel. Yes, so the company is called Voestalpine Welding. We are an Austrian company with a global position, so we are actually present in all regions globally. And so we have 3 brands, let's say like that. We have 3 brands, which is the first Böhler, everything about joining products. The second brand is UTP, everything about hard facing and wear protection. And the third brand is Fontergen, which is all about brazing. So we cover all filler metals in these 3 brands to suit all different kind of segments. So we have a segment approach as well. So for joining, we have the shipyard, the shipbuilding industry, we have the automotive industry, we have the power industry. So we have different focus industries. And the same for UTP, we have dedicated segments where we focus on, like the steel segment, the cement industry,
and the mining industry and the forging industry as the four main pillars. And Fontaine as well is also oriented by segment, so they produce everything about brazing filler metals that are used in heat and ventilation, so the air conditioning, and also in automotive. There's a lot of brazing in automotive. So this is the overview about the company. Sir, Indian market, Asian market is the where your company present the market and who's the product find the market. Yes, so India is very important to us, specifically in my position as being the global head of UTP. So we are actually focusing on the steel industry. So as you know, Tata Steel or Jindal are the two examples of companies that are not only producing steel but that are doing also the maintenance or actually delegating the service providers, so delegating the job to service providers which are doing the job and coming on site to hard phase and replace concast rollers in the steel plant. And evolution is huge, so I think that we are in some kind of conservative industry. So we have to accelerate the process that are used in other industries. So there's an opportunity, I would say, for UTP, but also for the industry, not only in India but also globally. But I would say rather in the repair and maintenance industry, there is really an opportunity to, I would say, take on the existing new technologies that are not yet in place. So that's also for India. The youth employment is very important. I mean, as I mentioned before, there is a lack of welders, so there are two ways to go. We need to attract the youth actually into the industry. This happens by being a little bit more, a little bit more attractive, and a small example is having new PPE material that is more modern and more responding to their needs and their expectations. It's a new generation with a new way of thinking, and you need to answer this. So that's one way to go, is to attract them directly, and if not, because there's a real big lack of welders not only in India but also worldwide, is to also start to automate more and more. So robotics is definitely a topic, cobots is definitely a topic, and automated integrators is also a third channel for that. Thank you, sir. National Welding Seminar, how is the change the Indian economic, Indian industry and the future, who's the goal, welding technology? It's a nice question. I am Sallurai, former Senior Deputy General Manager from BHL Tiruchirappalli. I am also a former Chairman of Indian Steel Welding Tiruchirappalli branch. This interaction of welding experts throughout the country from some people from abroad helps us to raise our technology to the world level. This one, our GDP, our India's GDP is growing fastly. Third, we are going to next year. We are going to fourth. In another 3 years, we are going to the third position. So in this context, we have to raise our infrastructure, our boiler industries. Our boiler industry, actually, our BHL has done. I am from BHL. BHL has done a lot to our country, and we are doing more than 200 products. And our country, we are from 30 मेगावाट up to 1000 megawatts we are able to. जमशेदपुर में नेशनल वेल्डिंग सेमिनार हो रहा है, जिसमें टाटा स्टील के साथ साथ अनेक कंपनी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और सबसे बड़ी चीज है कि नया टेक्नोलॉजी वेल्डिंग जैसे क्षेत्र में आ गया है। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार झा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से हूँ और टाटा स्टील में कार्यरत हूँ। ये जो नेशनल वेल्डिंग सेमिनार 2024 हो रहा है, इसमें पूरे देश से कई नामी कंपनियां शिरकत कर रही हैं और कई बड़ी इंस्टीट्यूट के लोग भी आए हैं जो यहाँ पर अलग अलग आर्टिकल के ऊपर अपना व्याख्यान देंगे। इसका मुख्य जो थीम है इस साल का, वो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, वेल्डिंग एंड क्लैडिंग। इसमें हम लोग ये चीज़ जानने की कोशिश, और पूरे सोसाइटी और जो फेटर्निटी है मैन्युफैक्चरिंग का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, स्टूडेंट लोगों का और जो प्रोफेशनल लोगों का, उनको ये बताने की कोशिश करेंगे कि वेल्डिंग के क्षेत्र में क्या क्या नई तकनीक आई है, वेल्डिंग के क्षेत्र में क्या क्या नए काम हो रहे हैं देश में और विदेश में, और वेल्डिंग के क्षेत्र में क्या क्या सुरक्षा की दृष्टि से उपकरण आए हैं जिससे लोगों को जीवन और स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। सर, यहाँ पर बहुत सा स्टॉल लगा है, कंपनी नया नया, तो कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड वाइड नया नया आया और आपके पास आ गया? जैसे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत जोर है,
तो वेल्डिंग के क्षेत्र में भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग शुरू हो गया है और इसमें काफ़ी सफलताएं भी मिली है। तो आप कहीं भी किसी भी जगह से वेल्डिंग इक्विपमेंट और उपकरण को चला पाएंगे, उसका परफॉर्मेंस और उसकी जो पैरामीटर्स है उसको आप देख पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा एक नया चीज़ जो इस एग्जीबिशन में है कि सुरक्षा का एक हेलमेट और ग्लव्स है जो वातानुकूलित इन्वायरमेंट में जो वेल्डर है उसको सुरक्षा प्रदान करता है और उसको ऑक्सीजन भी मिलता है, उसको जो प्लाज्मा रेज या जो हानिकारक रेज है, किरण है, उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। वो अपने आप चालू होती है और अपने आप बंद होती है, उसकी जो स्क्रीन है। और ये एक गेम चेंजर की तरह है इस क्षेत्र में, जो वेल्डर को बहुत सर ये बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट आप लोग फुल किए हैं। हमें लगता है कि नेशनल एग्जीबिशन में इसी टाइप का नए नए प्रौद्योगिकी आता है। वो जो हेलमेट अगर बात किया जाए सर, क्योंकि वेल्डर जो होता है उनका आँख डैमेज होने का बहुत अधिक संभावना है, वो हेलमेट का कॉस्ट क्या पड़ेगा मार्केट में अभी सर? वो कॉस्ट करीब 12,000 के आसपास रहता है अनुमानित। ऐसे तो जो जो है ये तो लगभग हम लोग वही डिस्कशन कर रहे हैं, अनुमान 12,000। तो सर उसका कॉस्ट कम करने के लिए, क्योंकि बहुत अधिक रेट है, जो आम वर्कर है उसका यूज करने में अभी भी देर लगी है, तो क्या इसमें इन्वेंशन हो रहा है कि उसको रेट कम किया जाए? ये रेट ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखेंगे उसमें जो चीज़ें लगाई गई हैं, उसमें जो उपकरण है वो जैसे ही स्पार्क शुरू होता है अपने आप वो कार्बन स्क्रीन आता है, उसके अंदर वेंटिलेशन का प्रोविज़न है, उसको कितने जोर से भी आप पटक दें तो टूटेगा नहीं। तो ये सब जो खासियत है वो उस दाम में मेरे समझ से ये काफ़ी लंबा टाइम होता है। एक हेलमेट आपका 3 साल के आसपास चलता है, तो काफ़ी मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है। सर वो हेलमेट क्या इंडियन बनाई है कि मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा? अभी तो यहाँ पर जो प्रदर्शित किया गया है वो मल्टीनेशनल कंपनी ने प्रदर्शित किया है, पर ये आने वाले समय में इंडिया में भी इस तरह का काफ़ी उपकरण बनना शुरू हो गया है मेक इन इंडिया के तहत।